Namaskar doston. In order to run a government, head of the state is needed. Now, head of the state can be hereditary in nature. That means generational rights have been given to the kings and the queens to rule. Or else, it can be republic in nature. Head of the state, when republic is elected, India is a republic. And in this video, we are going to study about republic. Welcome to SRIRAM's IAS. Welcome to this series of studying Indian polity through mind maps. And let's begin our video. Now, before I start, I would like to tell you about one-to-one free mentorship of SRIRAM's IAS. If you are interested in preparation of UPSC and you have any doubt regarding anything, you can approach us. The only thing you have to do is go to the description of this video, click the link, fill the form, and we will approach you. You can come and talk to our expert mentors. Now, the word republic, it's a very, very important word. Do not forget, friends, what is written in the preamble of the Indian Constitution. The preamble of the Indian Constitution says India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So it shows the nature of the Indian state. So when you say republic, it is the nature of Indian state. That simply means the head of the state is elected. President is elected. After every 5 years, the election of the president takes place in India. भारत में किसी को भी hereditary right नहीं है, कोई राजे रजवाड़े अब नहीं है, किसी को भी generational right नहीं है रूल करने का. जबकि दोस्तों इंग्लैंड में सिस्टम अलग है. इंग्लैंड is not a republican democracy, but इंग्लैंड is a monarchical डेमोक्रेसी. थोड़ा सा फर्क है, डेमोक्रेसी ब्रिटेन में भी है, डेमोक्रेसी इंडिया में भी है, बट उनका सिस्टम मोनार्कियल है और अपना सिस्टम रिपब्लिकन है. सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ व्हाट इज द मीनिंग? सिंपल मीनिंग इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोथ आर सेम, प्रेसिडेंट. Whereas in parliamentary form of government, there is a nominal head and there is a real head. The nominal head is the president and the real head is the prime minister with council of minister. अब इंडिया parliamentary form of democracy follow करता है. तो head of the state भी है. Head of the state क्या है? President. The nominal head is the head of the state. Whereas the head of the government is the prime minister. You must not forget this information. It's a very, very important thing for you to understand in the political system in India, the parliamentary form of government, which is there in India. Now, it's not hereditary unlike monarchy. We know. We have already seen preamble. So, India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. All these words are showing the nature of the Indian state, which is very much republican. Now, as you know, there is a president and president is a symbol of unity and integrity of this country, and the election of the president takes place after every 5 years. So constitutional provisions are there for the election of the president of India. If you see article 52 to article 62, provisions are there regarding the president. There shall be a president. How should the president be elected? The electoral college of the president of India, the qualification to become the president of India, the removal of the president of India, everything is there. One very important thing which you must remember is that president of India can also be removed on the ground of when the president is unable to follow the constitution. That is a very important thing. In a hereditary form, in a monarchical form, the monarchy cannot be removed. It happens only after a revolution or a revolt, which has happened in French Revolution and other kind of revolutions. But in India, if you see, the president is elected and there are grounds on the constitution on which the president can also be removed if the president is unable to follow the constitution properly. Inability to follow the constitution. Now, if you see, 26th January 1950, this is the date when the Indian Constitution got commenced. Commencement of the Indian Constitution. It got enforced on this day, and that is the day when which we celebrate Republic Day. Okay, so this is very important.
for us to understand that we celebrate this day as Republic Day. This is one of the symbolism of our national unity. This is just a extended word which is here. In general, the meaning of the word republic is that there is a elected head of the state. You must remember this. Now, the key features of this kind of system, having republican system, president elected by electoral college. Now, electoral college simply means the eligible voters. If you have to elect a president, there shall be some people who would be voting. The voting is not direct voting as happens in India for the election of member of parliaments or for the election of members of legislative assemblies, but indirect election happens in the case of president, and the people who are voting for this are nobody but the member of parliaments and the member of legislative assembly. Only the elected members, not the nominated one, but only the elected members. अब दोस्तों, initially I have said that president is the symbol of unity and integrity of the nation. Now it reflects the unity and integrity of the nation. आप देखिए, भारत में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स में हैं, सेंटर में हैं, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दोज हु आर इलेक्टेड वन, नॉट द नॉमिनेटेड वन, वोट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. तो एक तरह से भारत के लोगों ने जिन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में वोट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू मस्ट रिमेंबर दिस. मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज अ फिक्स्ड 5-year टर्म. एक तो इंपीचमेंट हो सकता है तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है. दूसरी चीज, 5 साल बाद एक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है. सेम आदमी क्या प्रेसिडेंट बन सकता है? कैन अ पर्सन बी इलेक्टेड ट्वाइस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस, इट इज पॉसिबल, बट the person has to fight the election all over again. So within 5 years, the election has to be held. Before the term is going to end, the next president must be elected by the electoral college consisting of the elected members of the parliament and the elected members of the legislative assembly. तो बहुत ही सुंदर सा सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम है इंडिया में. और ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हेरिडिटरी या मोनार्की होती है, वो जीवन पर्यंत राजा महाराजा बने रहते हैं, उनको रिमूव नहीं किया जाता है. उनके बाद उनका लड़का आकर सीट पर बैठ जाता है. द डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइमोजेनिचर, सबसे बड़ा लड़का राजा बनेगा, वो फॉलो होता है. जनरली जहाँ पर भी हेरिडिटरी सिस्टम रहा है, मोनार्की सिस्टम रहा है, इसी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइमोजेनिचर फॉलो होता रहा है. बट रिपब्लिकन सिस्टम में दोस्तों देखिए, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस हो जाते हैं. कमिंग हेयर, नो हेरिडिटरी रूल, इक्वालिटी बिफोर लॉ. अब देखिए, एनीबडी who fulfills the qualification, the constitutional qualification to fight the election for the president of the country can fight the election. अगर आप constitutional qualifications को fulfill करते हैं तो आप elections fight कर सकते हैं. ये बहुत important जानकारी है. Everybody can become the president of India. The only requirement is, are you able to clear the qualifications given in the constitution or not? That is what is रूल ऑफ लॉ. एक और चीज देखिए, रूल ऑफ लॉ ऑन वन हैंड एंड रूल ऑफ मैन ऑन द अदर हैंड. अगर मोनार्कियल सिस्टम्स में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं, इफ इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इट इज रूल ऑफ अ मैन. कुछ किंगडम्स हैं, सऊदी अरेबिया का किंगडम है, वहां कोई ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है, तो रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, बट रूल ऑफ मैन है. व्हेन यू से रूल ऑफ मैन, दैट सिंपली मीन्स दैट अ मैन holds all kind of power, the power to make law, to power to implement the law, and the power to adjudicate, to deliver justice. Now, throughout the world, the constitutional makers have understood the importance of keeping these 3 forms of the government separate from each other, these 3 organs of the government separate from each other. The law-making body, the legislature, must be separated from the executive, which must be separated from judiciary. In a parliamentary form of democracy, of course, there is a responsible government where the executive is responsible on the legislature, but still separation is maintained. तो दोस्तों, रूल ऑफ लॉ उसी समय निकल के आता है जब you have separation, you don't have a rule of a man,
you have separate bodies, and the head of the state is elected. That is the meaning of rule of law. So equality before law is very much intermingled with the concept of republicanism. This is important for you to understand. Popular sovereignty, आप देखिए कोई राजा महाराजा नहीं है, पॉपुलर सॉवर्निटी है, लोगों ने वोट देके, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वोट देके प्रेसिडेंट को बनाया है. अगेन इट शोज पॉपुलर सॉवर्निटी. मूविंग फॉरवर्ड, द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. सिग्निफिकेंस क्या है? अगर मोनार्की होगी तो किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहती है, अकाउंटेबिलिटी बहुत कम रहती है. यहां तो लेजिटिमेसी ही मिल रही है इलेक्शन से, और जब लेजिटिमेसी मिल रही है इलेक्शन से तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी. So the executive is accountable in a republican system. In the parliamentary form of government, what happens? The executive, the head of the executive, the head of the state works on the aid and advice of the council of minister. President works on the aid and advice of council of minister. जबकि आप presidential form में देखें, president independently काम करते हैं, but क्योंकि उनको जनता ने चुना है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है. सो दोनों तरफ, पार्लियामेंट्री फॉर्म हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज देयर. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ रिपब्लिकन सिस्टम. पॉलिटिकल इक्वालिटी बनी रहती है. पॉलिटिकल इक्वालिटी इसलिए बनी रहती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, ऑफ कोर्स मैन इंक्लूड्स वुमेन ऑल्सो, कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. What I told in the last slide, anybody who qualifies the constitutional qualification can become the president of the country. So political equality is always maintained. At the same time proportional representation से election होता है दोस्तों. तो जो states जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है उनका वेटेज, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू दोज स्टेट्स जहाँ पे जनसंख्या कम है. तो ये भी एक तरह से इक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. इट एंड्स द कॉलोनियल लेगेसी. कॉलोनियल लेगेसी में क्राउन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. कंपनी वॉज रनिंग इन द नेम ऑफ क्राउन. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रन्स इन द नेम ऑफ क्राउन. क्राउन का प्रोक्लेमेशन आया था, द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1 नवंबर 1858, जिसमें काफ़ी कुछ बोला गया था. सो सब कुछ क्राउन के द्वारा चलता था, बट हमने रिपब्लिकन सिस्टम अपनाया. क्राउन के ही रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे यहाँ पे, गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय. वो पूरा सिस्टम खत्म करके भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद जब संविधान बना तो वी हैव इलेक्टेड अवर ओन प्रेसिडेंट. इट रीएनफोर्सेस डेमोक्रेसी. देखिए बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होता है. जिस इलेक्शन के बारे में अपन ने यहाँ पे देखा, रिप्रेजेंटेशन हर एक कॉर्नर से आ रहा है देश के. बहुत इंपॉर्टेंट है that democracy is reinforced, and through this system democracy is actually reinforced. So republican system दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है किसी भी एक देश के सुचारू रूप से गवर्नेंस को चलने के लिए. You must understand this. Now there are several differences. We have discussed this in the beginning of the video also, but here also if you see there is a comparative note. There is a difference between United Kingdom and India. Now both of them follow the parliamentary form of democracy. India has actually borrowed this system from Britain. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आप हमेशा देखेंगे एक नॉमिनल हेड रहेगा और एक रियल हेड रहेगा. रियल हेड यूके हो चाहे इंडिया हो इज प्राइम मिनिस्टर प्लस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. दे आर द पीपल हु आर द एग्जीक्यूटिव. ऑन देयर एडवाइस द नॉमिनल हेड वर्क्स and they are responsible to the legislature. That is what is parliamentary form of democracy. But the nominal head, if you see here, this is different. If you see the model of United Kingdom, it is the king or the queen. Whereas in India, if you see, it is the president. This makes United Kingdom a monarchical democracy and India a republican democracy. I hope you have understood this, friends. So this was the topic, republic. It is very important. The meaning of it is that the head of the state is elected. The person is not monarchy. It's not hereditary. No generational rights have been given.
to the head of the state to rule, and the head of the state can be removed through impeachment. The head of the state also is elected after every 5 years. So thank you very much to be with me, to listen to this video, and have a nice day. Thank you very much. Jai Hind.